أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are going to start the Hadith lectures of Hadith number 33 from the book 40 Hadiths of an-nawawi. So Hadith number 33 from the book is: if people were given according to their claim, men would have laid claim to the properties of people as well as their blood, but the proof is on the claimant and the oath is on him who denies. This hadith was narrated by the Ibn Abbas, and this hadith is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. This is the Sahih hadith on Bukhari and इफ़ वी हैव टू एक्सप्लेन इट इन उर्दू, तो इसका उर्दू तर्जमा ये है कि अगर लोगों को उनके दावे के मुताबिक दिया जाता तो लोग दूसरों के माल और खून का दावा करते, लेकिन सबूत दावा करने वाले पर है और कसम उस पर है जो इनकार करे. ठीक है. नाउ व्हाट डज इट एक्सप्लेन? दिस हदीस इज़ अ बेसिक रेफरेंस इन केसेस ऑफ कंट्रोवर्सीज, डिस्प्यूट एंड डिनाइल. This passage actually the tafsir of the hadith, explanation of the hadith, which is explained by the author, is in easy words, it is that it actually, the passage explains one of the most important legal and ethical principles in Islam that is derived from hadith, that the burden of proof is upon the claimant and the oath is upon the one who denies. In Islamic law, Sharia, claims alone are not enough to establish someone's right or to convict another person. The Prophet said that the accuser, the claimant, must produce evidence or proof by name, and the defendant accused is presumed innocent until proven otherwise, and may only be required to swear on oath denying the claim. This principle is a foundation for justice and fairness in Islamic courts, ensuring that no one is punished or deprived of rights without clear proof. Next thing which is explained in this hadith is that limiting injustice. The Prophet ﷺ understood that the human nature is driven by greed, vengeance, or shaitan, and it can lead to people to make false claim. So this ruling restricts injustice by protecting individuals from false accusations and ensuring the legal process remains objective and evidence-based. Presumption of innocence. The accused is considered innocent until proven guilty, a principle mirrored in modern legal systems. The Prophet ﷺ guidance ensures that doubt favors the accused. Better to let a guilty person go free than to punish an innocent one, so that the innocent will not be punished. In Quran, Surah Nur, also there's an example in which the adultery from wife and the punishment is explained, and there it is an example in which Allah said it will prevent punishment from her that she testifies 4 times by Allah that he is of the liars. Okay, her own oath in Allah's name that her husband is lying protects her from punishment. Use of oaths in courts. If there is no proof, the defendant must swear on oath denying the accusation. Before swearing, the qadi, which is actually judge, warns him about the seriousness of false oaths, reminding him of the punishment in hereafter. And these are also mentioned in Quran. Now there are 2 types of oath: al-yamin al-sabr and al-yamin al-ghamas. The al-yamin al-sabr is a restraining oath, the oath by which the defendant is acquitted and the claimant is restrained from pursuing the claim further. And al-yamin al-ghamas, the submerging oath, is a false oath which submerges the liar in sin and leads to hellfire. It is one of the major sins in Islam. Now, upon false witnessing, the Prophet ﷺ counted false testimony among the gravest sins alongside shirk, which is shirk is associating partners with Allah, and disobedience to parents. This is the 3rd most gravest sins because it destroys justice and harms others. Judicial discretion.
If the accused refuses to take an oath, the judge may rule using his own discretion, which is also known as ijtihad, based on the available evidence and circumstances. However, the Prophet ﷺ cautioned that judges can only rule by what is apparent, and anyone who deceives the judge will face Allah's punishment in hereafter. Hazrat Muhammad ﷺ also said that you bring your disputes to me, and perhaps one of you is more eloquent in his argument than the other, and I judge in his favor according to what I hear. But if I have given him something of his brother's right, I have given him only a portion of the hellfire. So the summary of lesson is, justice in Islam is evidence-based, not claim-based. The accuser bears the burden of proof. The accused is innocent until proven guilty, and false oath and testimonies are major sins. Judges must rule by what is apparent, leaving ultimate judgment to Allah. Now, if we want to summarize it in Urdu for anyone who does not understand English, हम इसको उर्दू में करते हैं. ये हदीस बेसिकली इख्तलाफ, तनाज़े और इनकार के मामलात में एक बुनियादी हवाला है, और इसका हुक्म अदालतों में काजी के ज़रिए नाफिज किया जाता है. इस हदीस में जो असूल बयान किया गया है वो ये है कि महज दावा किसी हक़ को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि जब तक उसके साथ मुनासिब सबूत पेश न किए जाए, मुद्दई को कोई हक़ नहीं दिया जा सकता. इस तरह मुल्ज़िम को मुजरिम नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसके ख़िलाफ़ जुर्म साबित ना हो जाए. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की हर्स और इंतकाम की फ़ितरत को मद्देनज़र रखते हुए जब वो शैतान की मदद से जुल्म पर आमादा हो जाता है, इंसाफ की हदबंदी के लिए फ़ैसला कुन हुक्म दिया है. दावा करने वाले पर दलील पेश करने की ज़िम्मेदारी इसलिए रखी गई है कि उसका दावा मौजूदा ज़ाहिर शुदा हालत, यानी जो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं हालात, के ख़िलाफ़ होता है. इसलिए वो ऐसी बात बयान कर रहा है जो ज़ाहिर नहीं है और जिसमें शक की गुंजाइश है. इस हदीस से ये कायदा भी होता है कि अगर शक की सूरत हो तो बेहतर है कि एक मुजरिम को सज़ा से बचा लिया जाए, बजाय इसके कि किसी बेगुनाह को सज़ा दे दी जाए. इसकी एक वाज़ह मिसाल सूरह नूर में बयान की गई है, जहाँ अगर कोई शोहर अपनी बीवी को बदकारी करते हुए देखे और उस पर कसम खा ले तो कानून के मुताबिक उनके दरमियान अलहदगी हो जाती है, लेकिन बीवी को हद की सज़ा सिर्फ शोहर के कौल पर नहीं दी जा सकती. सूरह नूर में है, और वो औरत अपने ऊपर से सज़ा को इस तरह टाल देगी कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि शोहर झूठों में से है. इस तरह अगर कोई मरने वाला कहे कि फ़लाँ ने मुझे कत्ल किया, तो ये बात बज़ात ख़ुद काफ़ी नहीं, बल्कि ये सिर्फ दीगर शहादतों के साथ तायदी सबूत के तौर पर दी जाएगी. जब जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी सबूत ना हो तो मुल्ज़िम से कसम ली जाती है. इस तरह कसम इस शख्स से भी ली जाती है जो ये इनकार करे कि उसने निकाह किया, तलाक दी, गुलाम आज़ाद किया, कोई चीज़ बेची या किसी मायदे पर वादा किया, जब मुमकिन है कि इस वक्त गवाह मौजूद ना हो. ठीक है. कसम लेने से पहले काजी पर लाजिम है कि वो मुद्दे को अल्लाह के नाम पर झूठी गवाही के अंजाम के बारे में तंबीह कर दे कि ये कितना सख्त गुनाह है, और बताए कि दुनिया आखिरत में झूठी कसम खाने का अंजाम इंतहाई बुरा है और उसको जहन्नम की आग में जगह दी जाएगी. बारकल्लाह फ़ीक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा.